Hello YouTube, this is Manish. Today we are going to make a Flutter app where in which we can create a Appbar. Let's get started from this app. We have run my app is class, then we have to create it. Let's create it. First stateless it, then इसका नाम होगा my app. Then we have to use here material app. कॉन्स्ट को हटा दो यहाँ से, मटेरियल ऐप. हम यहाँ डीबग बैन इसको फॉर्स कर देते हैं पहले. एंड देन थीम हम सेट करते हैं इसकी थीम डेटा, देन प्राइमरी स्विच और देन कलर डॉट लेट्स से ब्लू. ओके, now in home property we can use scaffold basically a widget that gives us the layout for the app, like app bar, body of the drawer, etc. Let's in scaffold we can use app bar, then app bar, then we can set its title में हमें टाइटल को टेक्स्ट देना होगा. टेक्स्ट लेट्स से माई ऐप बार. ओके, दिस इज नाउ लेट्स रन दिस ऐप फर्स्ट. Now see, this is our app. This is look like. Then we can also give some adding properties like actions, list of action. That is, let's say we can use icon and icons dot, let's say login outline. If we refresh this, then we can get this icon here. We also can set leading icon, then here we can use child icon, or then here icons dot let's say home. We press it, here we have this. अगर हमें सेंटर करना हो इस ऐप बार इसको टाइटल को, तो सेंटर टाइटल ट्रू कर दो. Then we get center टाइटल. देन आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच.